Hi dear friends, let us discuss a very important and urgent issue, the Rafale aircraft, the game changer. जानिए राफेल के आने से भारत कहाँ तक सुरक्षित. So the Dassault Rafale literally means the burst of fire, or say the great wind. In a military sense, it's a French twin-engine delta-wing multi-role fighting aircraft designed and built by the Dassault Aviation. Oh, what a view of Rafale, which has touched down the Ambala Air Base. It's a French twin-engine delta-wing multi-role fighter aircraft designed and built by Dassault Aviation, and now this is available to guard the Indian borders. So what was the actual deal? So the NDA government inked a 59,000 crore rupees deal in 2016 to produce and purchase 36 Rafale jets from the French aerospace Dassault Aviation. यानी एनडीए सरकार ने 59,000 करोड़ रुपीस की डील की थी, जिसमें 36 राफेल खरीदे जाना प्रस्तावित थे, जिनमें से 5 राफेल भारत को हाल ही में प्राप्त हो गए हैं. And not only it deal consists of the Rafale jets, but the missiles which are to be embedded in Rafale, like the Meteor missile, like the Scalp missile, like the Mica Missile. So these are the missiles which are there embedded there in Rafale. I repeat the name: the Meteor missile, the Scalp missile, the Hammer missile, the Mica missile. So we will later on we will discuss about all these missiles. So what are the key facts about the Rafale? So Rafale is a twin engine jet, and with the twin jet, since there are two engines, it's the fuel efficiency is more, it is more safe, because if one engine stops, the another engine is there, and it has more power. And the Rafale has delta wings, so this is a special kind of wings. Delta here means a triangular shaped wings in which are more aerodynamic. तो इसके जो विंग हैं त्रिभुज आकार के हैं, जिससे ज़्यादा एरोडायनामिक शेप इसकी हो जाती है. And Rafale is multi-role combat aircraft. Combat aircraft means it can not only be used by in combat. Combat aircraft not only used in combat, but since it is a multi-role, it has other than the combat role also. तो इसके बहुउद्देश्य हैं, इसके combat में भी यूज़ होता है और ये नॉन combat purpose के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. Now what are the key missiles in Rafale? तो आप देख रहे हैं friends, this is the Rafale plane, and you know the Rafale plane कैन बी फ्यूल्ड इन एयर. ये देख रहे हैं आप, पाइप चल रहा है, तो यहाँ से इसको आप फ्यूल कर सकते हैं. और मिसाइलें जो हैं इसके नीचे लगी हुई हैं, लाइक माइका मिसाइल, एयर टू एयर माइका मिसाइल. देन इस तरह की मिसाइल लगी हुई है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, 300 किलोमीटर तक की रेंज है स्कैल्प क्रूज मिसाइल की, जबकि माइका की रेंज है 80 किलोमीटर. एंड वाई द क्रूज इज, इट इज़ नोन एज क्रूज बिकॉज द स्कैल्प मिसाइल कैन गेट ए क्रूज स्पीड. तो ये क्रूजिंग कर सकता है, अर्थ के सरफेस के साथ साथ, उसके सरफेस के साथ साथ भी चल सकता है. एंड देयर इज ए हैमर मिसाइल, इट हैज़ दिस वे हैमर मिसाइल अप टू 70 किलोमीटर, एंड इट कैन टेक ए टारगेट 6 टारगेट्स टुगेदर. एंड इट हैज़ मेटोर एयर टू एयर मिसाइल, एंड विच हैज़ ए 100 किलोमीटर रेंज. नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी अबाउट द माइका मिसाइल, the Scalp missile, the Hammer missile, and the Meteor missile. Number 1, the Mica missile. The Mica stands for Missile De-Interception De-Combat Auto Defense. It is basically interception, combat, and self-defense missile.
इसका मतलब है कि जो माइका मिसाइल जब चलती है तो ये इंटरसेप्शन कर लेती है कि दुश्मन का ख़तरा कहाँ से आ रहा है, एंड सेल्फ डिफेंस यानी ये सेल्फ डिफेंस करने में भी सक्षम है. And it is based on the principle of fire and forget. यानी once the pilot pushes the button for a particular target, then he need not to worry, because this missile itself searches the route for the target. And not only Mica missile is used for air platforms but also for the ground units, and even it can be used to destroy the ships of the enemy. तो बड़ा बेहतरीन यूज़ है जो माइका मिसाइल है. एयर में भी कर सकते हैं, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू वाटर, तीनों तरीके से माइका मिसाइल का यूज़ हो सकता है. नंबर 2, देयर इज़ अ स्कैल्प मिसाइल. अभी आपने ये जो देखा था स्कैल्प, सो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है स्कैल्प. सो दिस मिसाइल इज़ मेड फॉर रेफेल फॉर मिराज 2000D and it is intended to strike high valued stationary assets and it can penetrate in depth as the name scalp. तो बहुत अंदर तक दुश्मन के जो अड्डे हैं उनमें मार कर सकती है, उनके स्कैल्प को तोड़ सकती है. So it can even destroy the radar installations, the communication hubs, the port facility. तो बेसिकली जो स्कैल्प यूज़ होना है एयर टू सरफेस यूज़ होना है. Then the hammer missile, that is highly agile and maneuverable munition. So this will be used for number of purposes including the air to ground, and 60 to 70 kilometer the target can be taken by it. Hammer missile, that is highly agile missile. ये देखिए hammer missile इस तरह से लगती है, and it can take 6 targets at a time. And the fourth is the Meteor missile. So Meteor is an active radar guided beyond visual range missile. So whenever we say a missile is beyond visual range, that means it can take a target away more than 37 kilometers, because within 37 kilometer is the visual range in air. 37 किलोमीटर के अंदर एयर में विजुअल रेंज होती है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज मीन्स मोर देन 37 kilometers. So the Meteor missile can take a target in excess of 100 kilometers. तो जो Meteor missile है वो 100 किलोमीटर से ऊपर तक के टारगेट्स ले सकती है. इवन 150 किलोमीटर तक का टारगेट भी Meteor missile ले सकती है. So this Rafale is studded with number of missiles, like you have seen the Mica missile, the scalp missile, the hammer missile, and the Meteor missile. Now, what is the key radar signature of radar? Rafale. यानी क्या राफेल को दुश्मन के राडार पकड़ सकते हैं? Here we mean by the term, what is the key radar signature of Rafale? So Rafale is not a 100% stealth aircraft. It's a partial stealth aircraft. That means it has reduced radar cross section. It has reduced radar signature. Now, it is not a 100% stealth aircraft. यानी 100% stealth नहीं है, आंशिक रूप से ये stealth है, यानी आंशिक रूप से दुश्मन के राडार से ये बच सकता है. Now, what is a stealth aircraft? Stealth aircraft is an aircraft which can hide itself from the radar of the enemy. So stealth aircraft are designed to avoid the detection by the enemy's radar by adopting various technologies to reduce its reflection, to reduce its emission. Like it may be a radio wave reduced reflection, or say the infrared one, or say the radio frequency one. So that is known as the complete stealth technology. So the 5th generation fighter aircraft are having the stealth technology. जो 5वीं श्रेणी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके पास होता है stealth technology, like the Chinese J-20. The Chinese J-20 has stealth technology. तो जो हमारा जो
अभी हमने जो परचेज किया है रफेल, ये इसके पास कंप्लीट स्टेल्थ नहीं है लेकिन एक गुड अमाउंट ऑफ स्टेल्थ है. एंड अनदर थिंग, इट हैज़ ए रिड्यूस्ड राडार क्रॉस सेक्शन. तो ये अच्छी बात होती है रिड्यूस क्रॉस सेक्शन होने की. रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ए radar cross section is a measure of how detectable an object is. So when there is a reduced cross section, that means it can be detected. And when there is a large RCS, that is radar cross section, that means it can be easily detected, it is easily seen. So the good point with the radar is, with the Rafale is, that it is having a good amount of stealth, number one. Number two, it has reduced radar cross section and it has reduced infrared signature. Again the same thing, if a fighter plane is having the reduced infrared signature, it can detect, it can hide itself from the radar of the enemy. So now इस तरह से आपने देखा कि जो रफ़ेल है ये दुश्मन के जो रडार हैं वो आसानी से इसको पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स रडार सिग्नेचर इज़ लो. अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज़ द रडार यूज्ड बाय रफ़ेल. यानी रफ़ेल दुश्मन के ठिकानों को देखने के लिए कौन सा रडार इस्तेमाल करता है. सो द रफ़ेल is fitted by the Thales RBE2 passive electronically scanned multi-mode radar. तो बेसिकली जो रडार वर्ड है इसका आर का मतलब होता है रेडियो वेव्स. सो दिस हैज़ ए वेरी एडवांस Thales RBE2 passive electronically scanned multi-mode radar. अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो रडार है, रडार बेसिकली एमिट्स द रेडियो वेव्स एंड these radio waves hit with the fighter aircraft of the enemy, and if they return back, so then radar searches successfully that there is an enemy threat. तो रडार इस सिद्धांत पे काम करता है कि ये रेडियो वेव भिजवाता है और अगर दुश्मन का जहाज़ कोई एयर में दिखे तो वो रेडियो वेव्स उस जहाज़ से टकरा के वापस आ जाती हैं और इस तरह से रडार को पता चल जाता है. तो इसके पास बहुत ही एडवांस रडार है थेल्स RBE2 जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन मल्टी मोड बेस पे काम करता है. सो ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, इसको पैसा भी बोलते हैं, PSA, दैट इज पैसिव फेज्ड एरे, is an antenna in which the beam of the radio waves can be electronically steered to point in different directions, in which all the antenna elements are connected to a single transmitter. इसका सिंपल मतलब ये है कि एक बार में इसका रडार बहुत सारे ठिकानों को देख सकता है और सिंगल ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर को मैसेज दे सकता है. सो दिस इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी विद इट्स रडार. Now another question, what is the generation wise category of the Rafale? So although Rafale is state of art, but it does not belong to the 5th generation, it belongs to 4.5 generation. So these are the 5 generation of the fighter aircraft from 1st generation to 5th generation. देखिए जो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट थे 1940s 1950s अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए थे. देन द सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट अराउंड 50s एंड 60s में, और धीरे धीरे फिर उसमें देयर वाज ए टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, द थर्ड जनरेशन. एंड द फोर्थ जनरेशन जो 70s 80s 90s में आई, द फोर्थ जनरेशन. सो दे आर फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स, मल्टी रोल कैपेबिलिटी आ गई इनमें, और ये जो हैं ये जो लाइक मिराज 2000. फिर फोर्थ जनरेशन में भी प्लस फोर्थ आया. प्लस फोर्थ का मतलब है 4.5, जैसे कि सुखोई 30 MK या रफेल हो गया. सो धीरे धीरे देयर इन 4.5 देयर इज एडवांस एवियोनिक्स एंड देयर इज ए पार्शियल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, राइट. सो द रफेल बिलोंग्स टू 4.5. और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो दे आर द मोस्ट एडवांस वन, and the 5th generation use stealth technology. That means the radar cannot detect them.
That means their radar signature is 0. And not only this, the stealth aircraft, there are few examples in the world of the stealth technology, and the 5th generation multi-role fighter jets, and their speed is also super cruise. Normally their speed is 2 Mach or more, like the American F-A-22 Raptor. तो अमेरिका का जो F-A-22 Raptor है ये 5th जनरेशन है, और भी अमेरिका इस तरह के फाइटर जेट्स को बना रहा है, लाइक F-35 Lightning II. ये कुछ एग्जांपल्स हैं 5th जनरेशन के. देन जहाँ तक रशिया की बात है, तो रशिया हैज़ ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफ T-50, और जो चाइना है इट हैज़ ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20. तो radar is a 4.5 generation, or say the 4+ generation aircraft, and it has a speed up to 1.8 Mach. So Mach, the speed of the fighter aircraft is measured in Mach number. 1 Mach number is equal to the speed of the sound, and the speed of the sound is 330 meters per second. ध्वनि की गति है 330 मीटर पर सेकेंड, और जो रफाल है वो ध्वनि की गति से लगभग दुगनी गति, यानी 1.8 गुने तक इसकी गति है. सो इट हैज़ ए वेरी फास्ट स्पीड, and it has multi-role capabilities. That means not only for combating but other purpose. It can be used for electronic warfare, air defense, ground support, in-depth strike. So that belongs to 4.5 generation. So dear friends, in the context of the recent standoff between India and China, now what is the Rafale counterpart of China? That means next question is, what is the Chinese challenge to Rafale? यानी क्या चीन का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना राफेल से की जा सकती है? Yes, my dear, the China is having J-20 Chengdu jets, and the China has the 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट्स. ये हैं देखिए J-20 चैंगडू जेट्स. ये कंप्लीट स्टेल्थ है, यानी दे कैनॉट बी लोकेटेड बाय द रडार. तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया. J-20 चैंगडू jet of China is complete 5th generation combat jet, whereas Rafale is 4.5 generation. But the another important thing is J-20 has no combat experience, but Rafale has lot of combat experience. It has combat experience in Afghanistan, Libya, Mali. तो कहने पे पन्नों पे भले ही J-20 5th जनरेशन हो, लेकिन J-20 चेंगडू को कोई युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि राफेल दुनिया में कई जगह सफल हो चुका है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लीबिया हो या माली हो. So, and another thing is Rafale can also carry more fuel and good number of weapons in comparison with J-20. So this is the deadly J-20 of China, or this is the stomach of J-20, and it can load number of missiles. So dear friends, these are some basic specifications of Rafale. And when the 5 Rafales, they came from France, initially they landed to Abu Dhabi and they arrived to India at Ambala Air Base, and they were guarded by Sukhoi. And when they reached to Ambala, they were given the water salute. And why Ambala Air Base was selected, my dear friends? Because Ambala Air Base is not only close to Pakistan, it is also close to China. So that is a dual advantage, and it has lot of good infrastructure as far as the Air Force base is concerned. तो इसीलिए राफाल को बुलाने के लिए हिंदुस्तान में अम्बाला एयरबेस को चुना गया. And one more thing, now we have Rafale. So if we want to do the air strike, we need not to enter in the territory of the enemy. Within our, before the LAC, the line of actual control, the Rafale can hit its target. यानी राफाल के आने के बाद अब हमको दुश्मन के वायु सीमा के अतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है. हमारी खुद की सीमा के अंदर रहते रहते राफाल पाकिस्तान और चीन को
छठी का दूध याद दिला सकता है. Like if we have Rafale, we need not to go to Balakot. From India, the Rafale can take its targets. So it's a welcoming thing. It's a cheerful thing for all of us. And I hope you like this video. Thank you very much. All the best to you. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.